Okay, I think we're good to go. Yeah, okay. Just Yeah. All right, man. So let's begin with okay. product management. Right Yeah. now, I'll give you a one-line answer. एक line में बता देता हूँ product management होता क्या है? जी Basically, जी it's management of product, or you can say product manager कौन होता है? He or she is the CEO of the product. Like that is the best definition that I can give. But now to understand better what product management is all about, I just tell you what their job is, right? So product managers Yeah. spend time on identifying and defining problems, like क्या Yeah. problems हैं, right? And next, creating a strategy to solve those problems, and Yeah. communicating with different stakeholders, and then Yeah. also coordinating the development of the solution for the product. Okay. And then we Okay. have basically responding to fires, like कोई product development में है तो Okay. client आके कहता है कि अभी ये वाली चीज भी ऐड करनी है, वो Yeah. भी ऐड Huh. करना है, राइट? सो इस Okay. प्रोडक्ट Okay. मैनेजर्स जॉब कि इसको कैसे हम इनकलकेट करेंगे अपने पूरे सॉर्ट ऑफ जर्नी में in the development Okay. of the product. And Okay. now basically these are some of the questions that the product manager answers. I'll tell you those questions. So Okay. I What? have all my like topics that I want to talk, so I'm just looking at them. So one of the Okay. questions is, what are we building? Like हम बना क्या रहे हैं, right? हम Okay. development की चीज की कर रहे हैं. And Okay. next is, who are we building this for? Like बना तो Okay. रहे हैं, but किसके लिए बना रहे हैं? Yeah. And then हम ये problem solve क्यों कर रहे हैं, right? Yes. एंड हम Yes, ये sir. प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन क्यों दे रहे हैं उस प्रॉब्लम का. Okay. And when we have all these answers, then the question comes, when are we going to build this? Like बनाना कब है, बनाना है, but बनाना कब है? So these are some of the questions that Yeah. product managers answer. Okay. And now why is it important? Like product manager, if to be honest, India में इतना कुछ product management का भी है नहीं. Like not a lot of people know about product management. You won't find much product managers in India, or much job posts in India about product managers. But Okay. it's really important because building a product is more complicated than ever in today's Okay. world, right? So what we really need is product managers so that they can make sure that the team is building the right product and actually building the product that the people want, right? Okay. So that's basically sort of summary of what product management is and why is it important. And then we have some sort of things that the product manager makes sure, like obviously Okay, product sir. manager works on a number of problems, but some of the Oh. things that they make sure is, one, the problem is real. Like as I Hmm. said कि product manager का काम है problem identify करना, the first job. So Yes. making sure that the problem is real, and second, Yeah. the users are real. Like जिन्हें वो Okay. problem है वो users real हैं. And then third, जो company या जो हम लोग solution plan कर रहे हैं, that solution provides some value. Right? Okay. I hope that makes sense. But that's sort of what product management is about. Okay. And next, I think let's dive into the role of product manager. Let me Okay. just see. Yeah, I think this is good. Okay, and so if you want to understand product management better, you can sort of, if you remember the Venn diagrams, like in Yeah. sets and intersection. Yeah. So you can Yeah. think of it as take one circle of design, one circle of business, one circle of technology, and the intersection Okay. of all these three, that is product management, right? Okay. Yes. So product manager has to be good at designing. He or she has to be good at business aspect and also good at the technology side. So not One man army. essentially, yeah. I mean, you can think of it that way. But then again, product manager has, he or she has to communicate a lot. तो जो Oh, कम्युनिकेशन okay. वाला पार्ट है उससे लाइक जी. डजंट हैव टू नो हाउ टू कोड रियली. वो कोडर्स Okay. को बोल सकता है जो डेवलपर्स हैं कि वी नीड टू बिल्ड दिस एंड दिस इज योर जॉब, देन द डेवलपर्स विल डू देयर जॉब, राइट? बट दैट्स सॉर्ट ऑफ अ समरी कि प्रोडक्ट मैनेजर मैनेजमेंट होता क्या है. एंड next we can talk about what is the role of product manager in different companies, because the role of product manager varies from companies to companies. Okay? Okay. बिकॉज कुछ कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट लेड होती है, कुछ कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट लेड होने की बजाय इंजीनियरिंग लेड होती हैं, एंड कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट प्लस इंजीनियरिंग की पार्टनरशिप होती है उन कंपनीज में. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है
एंड आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो. लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ गूगल. गूगल जनरली हायर्स प्रोडक्ट मैनेजर्स जिन्होंने एमबीए किया है. दैट मींस जिनको बिजनेस साइड थोड़ा ज्यादा अच्छे से आता है, राइट? Okay. And then there's other companies like Zillow, they hire product managers जिनको टेक्नोलॉजी का आइडिया थोड़ा ज्यादा है, right? Okay. So that's sort of how it goes. So it's for you to decide कि आपने किस टाइप की कंपनी ज्वाइन करनी है and stuff like that. But then also product managers can choose to specialize in a particular field. ठीक है. Okay. अब जैसे अगर हम बात करें वेब डेवलपर्स की, वो चूज कर सकते हैं या तो हम फ्रंट एंड हाँ. करेंगे या बैक एंड करेंगे, Backend. राइट? तो ऐसी प्रोडक्ट मैनेजर कैन चूज इधर आई डाइव इनटू डेटा और आई डाइव इनटू ग्रोथ. तो उसके अकॉर्डिंग वो टीम ज्वाइन करेंगे. डेटा हो गया, ग्रोथ हो गया, या फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यू नो, एंड देन इंटरनेशनलाइजेशन. इंटरनेशनलाइजेशन होता है बेसिकली कि जो बंदा है उसका काम है इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है. Okay. So that's roughly that. And I'm not, I have like a lot of stuff, but I'm trying to cover only the basic वाला जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत interest आए इस चीज में. Yeah. So Yeah, before I started with the role of manager and role of what is the role in company. So what is the main differences of product management between like software companies and like industries like industrial parts? You can take like Maruti Suzuki and BMW, and apart from this, like software product management in Google and Microsoft, because both of them are different things, and aspect of thinking, aspect of their thinking and with their data will be different. So how can we can choose that the product management in industries and product management in software companies? How can they invariate? Okay. Yeah, good question, man. Good question. So see, as I said, product manager role depends on company to company, right? It changes from company to company. तो अगर let's say BMW का कोई product manager है, that person has to have knowledge about the company. Like BMW क्या करता है? Cars बनाता है, and of course they do a lot of stuff, but the main thing is cars, like BMW the car, right? तो product manager को उस चीज की knowledge होगी. अब अगर कोई product manager है जो let's say गूगल में काम कर रहा है एंड वो किसी ऐप की टीम में है, एंड इनफैक्ट विद इन गूगल लेट मी टेल यू देयर आर मोर देन 1000 प्रोडक्ट मैनेजर गूगल में, और हर एक प्रोडक्ट मैनेजर की अलग टीम होगी. लाइक किसी की टीम होगी ऐप से रिलेटेड, किसी और की टीम होगी लेट्स से गूगल मैप्स, किसी की होगी जीमेल से रिलेटेड. तो उसमें फिर सब लोगों का अलग अलग काम होगा जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज कर रहे हैं. लाइक एज आई सेड, कैन स्पेशलाइज इन ग्रोथ. अगर आप ग्रोथ में स्पेशलाइज करें देन you'll be part of let's say marketing team or business development team, right? Okay. But let's say if you're specializing in software, then you'll be part of software team. So that's how it goes. It depends on you, what your skills are and what kind of role you're interested in, right? But at the end of the day, product management का जो main जो idea है कि what they have to do is they have to make sure कि product एक कोई problem solve कर रहा है, and they have to build the strategy कि कैसे वो बनेगा, पूरी उसकी साइकिल क्या होगी, कि इस महीने में ये काम होगा, इस क्वार्टर में ये काम होगा. तो पूरा स्टार्टिंग से बिल्डिंग से लेके लॉन्च करने तक ये सारा कुछ प्रोडक्ट मैनेजर ने देखना है. एंड अब लॉन्च तो सारी कंपनियां करती हैं. गूगल अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है, एप्स जो सॉफ्टवेयर वाले वो अपने ऐप लॉन्च करते हैं, एंड BMW अपनी कार लॉन्च करती है. तो द मेन आइडिया रिमेन सेम. टीम अलग है, आइडिया अलग है, बट द मेन आइडिया इज सेम. So I hope that answers the question that you asked. Okay, I got right? it. Okay. Right, and then next I can tell you a bit about the role of a product manager. The product manager का role हुआ first finding the problem, कि problem क्या है. Because if a company has to build something, always they have to think कि कोई problem होगी तभी तो कुछ बना रहे हैं. I mean not like TikTok ने तो कुछ भी बना दिया, but generally if you want to develop a successful business, it's well known you have to solve a problem, right? A real problem. So finding the problem, creating the strategy to solve that problem, and then communicating with different teams. Like किसी company में कितनी team होती हैं? There's user research, there's marketing, there's business, there's mobile development, app development, web development, design team. तो इन सारी teams के across sort of एक बीच में प्रोडक्ट मैनेजर है, बाकी सारी टीम्स आर अराउंड द प्रोडक्ट मैनेजर. तो प्रोडक्ट मैनेजर का काम हुआ इन सब टीम से कम्युनिकेट करना और यूजर्स की प्रॉब्लम समझना थ्रू द यूजर रिसर्च टीम,
एंड इन सबको बेसिकली कनेक्टेड फॉर्म में पूरी डेवलपमेंट करना. दैट इज द रोल ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर. Yeah, Right. so it is sometimes it will be more difficult that the pressure of CEO and above business crisis. And during this COVID-19, product manager will be face lots of problem because their product will be because you can see that graph and Sensex and lots of companies go down daily day to day. Right. And product many companies like many car companies and many industries companies and many software. I think so software companies are not so affected, but industries are so affected during this COVID-19. So Yeah. all the pressure of all of the pressure of COVID-19 will be impact on product manager and product developer. You can see that how can you see this pressure will handle, and how can you as a CEO of Verved, you have faced that problem. Like you can see the pressure and you can view all the perspective. How can you see? Yeah, so let me give you the answer to that. So as you said कि सारा pressure product manager पे आ जाएगा, that is not actually quite true, because see, product manager, it's not like one man army. I mean, not literally, because product manager का काम है to communicate with all the stakeholders. तो अगर किसी कंपनी में pressure बन रहा है तो it's not all on the product manager, वो सब teams के ऊपर बन रहा है. You know, development को बढ़ाना है, development नई update डालनी है to make sure that they are doing good in this time. जो मार्केटिंग टीम है उनको अपनी मार्केटिंग संभालनी है ताकि वो ऑनलाइन सब कुछ कर सकें if they were doing offline. And then comes the thing about my company Verved. Verved has always been remote, right? So we're not at all impacted by COVID-19. यानी कि अभी कंपनीज रिमोट शिफ्ट कर रही हैं. We've always been like that. तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से. No, I say that any software companies, your companies are not affected. If you can see that industries, because today I read the business insider, then I read that many industries are affected and so many impact, and companies CEO and like all these stuff are going wrong and they have taken decision, but apart from this, and their products are not like selling and people are not buying all of this. So it can create pressure between between all the whole system. You can say that as a product manager, you can judge how can you can judge it, and how can you can demoralize this pressure, decrease this pressure. Yeah, so as a product manager, see, what we can do is, as I said, the biggest thing we do is identify the problem. Yeah, that also means identifying the impact. तो COVID-19 से हमारे प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, पहली चीज तो वो है, like identifying all of that. And then the role of product manager would be कि उस impact को हम handle कैसे कर सकते हैं, how can we best handle the impact, right? And once that is decided, I mean the job literally remains the same. तो next product manager ने क्या करना है, they will think of a roadmap. रोडमैप की भी बात कर लेंगे आगे, बट पूरा रोडमैप सोचेंगे कि अभी कैसे हम इसको टैकल करेंगे प्रॉब्लम को, राइट? तो उस रोडमैप के बारे में पूरा सोचेंगे, एंड देन दैट्स हाउ दे बेसिकली टैकल इट. आई मीन, आई नो इट्स अ टफ टाइम, सारी कंपनीज, प्रेशर तो सब लोगों पे पड़ रहा है, एंड आई होप एवरीवन गेट्स थ्रू इट राइट क्विकली. आई होप आई मीन obviously there's going to be a lot of startups, and जो existing startups है उनका काफी हो रहा है नुकसान and pressure, but we can only hope and stay positive. And बाकी obviously man, it's tough. Like think about the companies जो remote work नहीं करती थी, उन्हें पूरा infrastructure अपना remote बनाना and stuff. तो definitely it's really tough. And yeah, I think people will get through this. Okay, we will go through all my question. I think we will take question from audience if you have any question regarding product management before starting. Sure. Yeah, anyone have any question? That we have lots of questions, but if you have any question, you can ask. You can drop in chat box. Hey guys, feel free to ask any question you have. I'll try to answer to the best I can. And I guess until then, I can just tell a bit more about, sort of stuff. So I talked about
identifying the requirements. Like हमने एक problem तो identify कर ली, right? Yes. फिर उसकी requirements क्या होंगे उस problem के solution की, तो ये काम भी product manager का है. And how do you identify problems? इसके 4 method हैं. One, you can do research. ठीक है, research कर लो and पता कर लो कि क्या क्या requirements हैं. Second is prototyping. You know what prototyping is. You build a sample project and see how that solves the problem. And next is taking input from the users and customers. Like this is something that most of the good companies focus on heavily, because तुम्हारा product end में use किसने करना है? Users ने करना है. Users. तो अगर आप user से ही feedback ले लो, अगर आप user से ही feedback ले लो in form of surveys या फिर in form of ratings, so that's the best thing. I mean, users ने अगर आपको बता दिया this is the problem, then what can be better than that, right? But again, the thing comes, there are two things that you have to take care of. One is you will never be sure कि product की actual requirements क्या हैं. I mean, it's not कि एक बार ही पता चल गया and product बना दिया. It's a continuous process. हमें बार बार पता करना है. जो user research की team है वो अपनी research के inputs देगी कि these are our research inputs, and then we'll think about कि इनके basis पे हम क्या changes कर सकते हैं. It's a continuous cycle. And then the second thing, as I said, कि हम user से पता कर लें कि उसे क्या problems है. But then the thing we have to take care of is user से हम ये नहीं पूछ सकते कि यार तू बता ऐप कैसे काम करना चाहिए. हमें उसको थोड़ी ना आइडिया है कि उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा ऐप में. What they can tell you is कि उन्हें प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही है, उनकी नीड्स क्या हैं. So once you know that, आपको एक बार वो चीज पता चल गई, then it's your job to think about कि how can we best solve those problems. That's the job product manager की. And then I use this term product roadmap कि एक roadmap बनाना होगा. So roadmap is basically like एक document सा होता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि let's say first quarter में, यानी कि पहले 3 महीने में हम इस चीज पे वर्क करेंगे, and then next quarter में हम इस चीज पे वर्क करेंगे. तो sort of monthly हो गया या quarterly हो गया, जैसे भी कंपनी डिसाइड करे, वो एक डॉक्यूमेंट पूरा रोड मैप सा बनाती है एंड उसमें लिखा होता है कि ये वाली टीम इस मंथ में या इस टाइम पीरियड में इस पर्टिकुलर चीज पे वर्क करेगी. Right? So that's the product roadmap. Like that's really simple, nothing too complicated. And then another term that comes when talking about product management is product requirements document, or PRD. I'm going too much into the technical terms, but I think it's good to know. PRD is basically product requirement document. तो products की requirements का एक document, that is PRD. Simple. अब उस PRD में हम लिखते हैं कि problem ये है, ठीक है, और हमारे goals ये हैं, हमें ये problem face हो रही है, background information ये, goals ये हैं, and हम ऐसे सक्सेस मेजर करेंगे जिसको हम कहते हैं सक्सेस मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ये की फीचर्स होंगे. तो बेसिकली पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज इन द पीआरडी, राइट. प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होगा तो उसमें हमारी जो भी लाइक फॉल्ट जो निकाली गई है पिछली प्रोडक्ट से एंड डिफरेंट थिंग्स, अगर हम उसमें कुछ नया ऐड करने वाले फीचर्स, एवरीथिंग विल बी इंक्लूड ऑन द पीआरडी. Yeah, everything. अब उसमें UI mockups भी ऐड कर सकते हैं. लाइक हमने सैंपल UI बना लिए, वो भी डाल दो PRD में. PRD is the document जो हमें हेल्प करता है किसी भी स्टेज पे. सर सैंपल UI क्या होता है? What is sample UI? Sample UI is like कि हमने कोई ऐप बनाना है एंड उसका UI सोचा है हमने. तो बेसिकली स्टार्टिंग में हम एक रफ स्केच बनाते हैं एंड उसका एक रफ UI बनाते हैं. तो that's the sample UI for that particular product, right? And so that's about the PRD and product management. Now I'll give you an example of roadmap. Okay, so let's say you have to build a alarm app, the basic app that you have on our phones, right? So for that, let's say you have 4 quarters, the time that you need to build the app. So हमने सोचा कि 4 quarters में पहले क्वार्टर में हम क्या करेंगे, बेसिक अलार्म फीचर डालेंगे. लाइक अलार्म बजेगा तो रिंग होगा फोन एंड उसमें शो करेगा कि दिस इज द टाइम, एंड जैसे होता है अलार्म क्लॉक में. एंड देन व्हाट वी कैन ऐड बेसिक फीचर में स्नूज हो गया, राइट. अपने का मन नहीं करता यार, किसका करता है. एंड सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर. बेसिक फीचर हो गए. देन सेकंड क्वार्टर में वी कैन डाइव इनटू a little more complicated features.
सो जैसे कि मल्टीपल अलार्म्स, लाइक आजकल हाँ हमारे फोन्स में होते हैं बट पहले नहीं होते थे। नोकिया वाले फोनों में नहीं 9-10 लगाओ, उससे ज्यादा नहीं लगते थे। बट ओके आजकल यू कैन सेट एज मेनी अलार्म्स एज यू वांट, तो दैट वी कैन डू इन द सेकंड क्वार्टर, राइट? एंड देन थर्ड क्वार्टर में हम क्या कर सकते हैं, और फीचर डाल दो, जैसे कि कस्टम टोन्स, है ना, गाना या बज जाए या फिर गाना बैकग्राउंड गाना बज सम जाए, मम्मी की आवाज लगा दो, उठ जा नहीं तो चप्पल आएगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, पजल, आजकल पजल आ रहे हैं नींद जब हाँ तक पजल्स। आई लव दिस बिकॉज अगर नींद सुबह मुझे नहीं खुलती है तो पजल सॉल्व करो तब, देन या आफ्टर बिल्कुल। सो दैट यस आल्सो समथिंग यू कैन ऐड। एंड देन लेट्स से फोर्थ क्वार्टर में हम और एडवांस फीचर डाल रहे हैं, हम स्लीप मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बंदा कितने ओके घंटे सोए एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये सॉर्ट ऑफ ओके एक रोड मैप हो गया कि पहले महीने ओके ये किया, दूसरे में ये किया, तीसरे में ये ओके किया, right? ओके So that's it for the product roadmap, and that's it for the role of a ओके product manager. ओके सर। Yeah. So do you guys have any questions so far? Question, yeah, I think we can take question from audience. Hello Someone said family, you hello. can, Hi. hello. Okay, so if you have any questions, तो पूछ लो product management से related, या फिर कुछ भी पूछ लो. That's how I do things. कुछ भी पूछ लो Yeah. random. ठीक है, नहीं तो we'll continue with a few more Uh, things. Like I just had in mind कि कुछ topics cover कर लेते, you know, for this हाँ live, and then I'll put it on हाँ YouTube. तो वहाँ भी अगर it देख हाँ लेंगे, it you know. yeah yeah sir. Yeah, so I think I'll just continue with it. Because the product management actually, like लोगों को, they don't know about product management. It is certainly, it is not new, but इसका इतना hype नहीं था, you know, क्योंकि कॉलेज Okay. में हमें क्या सिखाते हैं, जैसे बीटेक करते हैं, तुम या तो वेब डेवलपमेंट कर लो, मोबाइल डेवलपमेंट कर लो, एंड आजकल आ रहा है एमएल कर लो, एआई कर लो, एंड यू नो स्टफ लाइक Yeah. दैट। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज सिखाती हैं, तो दैट्स व्हाई वी डोंट रियली नो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और थिंग्स लाइक दैट। Sir, someone asked question. Hi sir, could you please explain what is MVP in product management? Okay, MVP. Yeah. So MVP, like not only in product management, but अगर आप overall देखो MVP क्या होता है, technical term, it's a minimum viable product. Okay, and वो basically, अब ऐसे मान लो जैसे कि मेरी एक कंपनी, हमें एक ऐप लॉन्च करना है, ठीक है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है एट द मोमेंट, या फिर बजट नहीं है टू मेक द फुल ऐप। तो हम क्या करेंगे, हम एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि बेसिक वर्जन बना लिया विद द मोस्ट Okay. इंपॉर्टेंट फीचर्स, एंड वो हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया टू जस्ट Okay. गेट द फीडबैक ऑफ ऑफ द यूजर्स, Users. कि Yeah. हमारा जो प्रोडक्ट है असली में कैसे काम करेगा जब हम पूरा फुल फ्लेज लॉन्च करेंगे इसको, you know. So Okay. that is MVP, and I can tell you a few things कि जब हम MVP बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं पहले कि क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे, you know, because हम Okay. कुछ फीचर्स चाहते हैं कि ये वाले फीचर्स टेस्ट हो जाए एक बार, और अगर ये वाले फीचर्स सही काम कर रहे हैं तो हम उसके बेसिस पे और फीचर्स बिल्ड कर लेंगे, right? Yeah. So that's something that we decide, and then we also sort of, once we've decided, we translate them to requirements, कि उनके लिए ये requirements हैं, उनके लिए हमें ऐसे डेवलपमेंट करनी है, and then we think about KPIs. Now I haven't told you what KPIs is, just like MVP in PUBG. Okay. Yeah, that MVP is most valuable player. I mean, yeah, I mean, you can think of it that way, but it's not most valuable player in product management. It's minimum viable product. तो यानी कि Okay. वो product जिससे काम चल रहा है, ठीक Okay. है? Just What like is KD ratio. Okay. I can give the KPI example using this. तो PUBG में आप Yeah. देखते हो ना, KD ratio होता है अपना, kill die ratio, kill death ratio, वही होता है ना, हाँ वही होता है। So उसमें हमें KD से पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट है, सॉरी आई मीन जो यूजर है, जो प्लेयर है, वो अच्छा खेलता है, गंदा खेलता है। अगर अच्छा खेल रहा है तो उसके किल ज्यादा होंगे और कम बारी मरा होगा, राइट? तो उसका Okay. KD ज्यादा होगा। सिमिलरली हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में KPI होता है, KPI होता है Okay. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो KD Okay. जैसा ही होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में हम कुछ ऐसे मेट्रिक्स लेते हैं जिनके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो रहा है या फिर Yeah. गिर रहा है। गिर रहा है. Okay. Yeah. So that is KPIs, and I guess the best example that I can give you is Zoom के KPI की बात करते हैं। Zoom तो सब लोग यूज करते हैं,
है ना? हाँ जूम पे yes सारी sir क्लास वगैरह होती थी। अब तो जूम की केपीआई की बात करें तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हो सकते हैं गाइस, यू गाइस लिसनिंग राइट नाउ? तुषार बताओ यार, पबजी की बातें हो गई, केपीआई क्या होगा जूम में? सो वन केपीआई yeah दैट आई कैन थिंक ऑफ इज कन्वर्जन टू सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली जिन लोगों ने जूम का फ्री वर्जन यूज किया है, ट्रायल वर्जन, यू नो आई मीन ट्रायल बेसिकली द वो वाला कि 40 मिनट तक कर सकते हो, उसके बाद मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो अगर हम okay ये हाँ पता करें कि कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को 40 मिनट के बाद यूज कर रहे हैं, कितने लोग पेड वर्जन खरीद रहे हैं, राइट, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट कि पर मिनट ऑल ओवर द ग्लोब जूम पे कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, यू नो, एंड थिंग्स लाइक दैट। और हम ये पता करते हैं कि सपोर्ट जो है, जो होता है ना किसी भी कंपनी में, सपोर्ट टीम जो होती है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको कितने लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होंगे जो बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट सही काम कर रहा है या नहीं, right? yeah And I think I'll also add this to it. KPIs, you can divide it into 4 parts: business, quality, okay and then we have okay product, and then development. तो okay बेसिकली 4 कैटेगरी हैं जिनमें हम KPIs को डाल सकते हैं। तो जैसे बिजनेस KPI में हो गया कि पेड वर्जन किसने खरीदा, राइट? okay क्वालिटी में हो गया कि हमारी सपोर्ट टीम का रिस्पॉन्स कैसा है, टाइम पे yeah कॉल उठा रही है, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे रही है। एंड देन okay प्रोडक्ट की बात हो गई, वीकली तो एक्टिव यूजर्स कितने हैं, यू नो, okay जूम पे वीकली कितने एक्टिव यूजर हैं। okay डेवलपमेंट की बात होती है अगर केपीआई, तो उसका हम क्या मेजर करेंगे कि हमने जो अपना रोड मैप बनाया था ना स्टार्टिंग में, टीम्स okay क्या उस रोड मैप के अकॉर्डिंग टाइम पे काम पूरा कर रही हैं। yeah जो दैट विल बी हमारे द डिफेंस प्रोडक्ट, से या okay दैट विल बी द डेवलपमेंट केपीआई। okay So that's about that, man. That's about the KPI. And I think that these are just some of the basic terms that I wanted to give you guys on here. And someone said freemium model, तुषार। हाँ, freemium model हो गया basically। तो इसकी बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं different models की, different business models। तो जैसे कि एक तो होता है freemium, right? तुम फ्री okay में पहले ट्राई कर लो, एंड अगर सही लग रहा है तो तुम पेड वर्जन खरीद लो। एंड okay नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है कि इफ यू वांट टू यूज दिस प्रोडक्ट यू हैव टू पे फॉर इट, राइट? okay एंड देन देयर इज एड्स। तो हम देखते Hmm. हैं ऐड वगैरह जो आते हैं, राइट? वो हो yeah गया एक बिजनेस मॉडल। एंड देन वी हैव लाइसेंसिंग। जैसे अगर हम एंटीवायरस खरीदते हैं तो उसमें होता है ना कि 1 साल का लाइसेंस है, 1 साल तक तुम Hmm. इसको यूज कर लो, फिर तुम्हें रिन्यू करना Hmm. पड़ेगा, Hmm. राइट? सो okay दैट, एंड देन यू हैव अ पे पर यूज, यानी कि तुम एक बार ही यूज कर रहे हो इस प्रोडक्ट को, तो उस यूज के लिए पे कर लो, यू नो। So that's about different business models, and I think we've almost covered all different things that basic okay anyone should have the basic knowledge about okay product management. so sir you have taken the example of like अगर हम देखा जाए गूगल मीट ने आफ्टर कोविड-19 ज्यादा अपना डेवलप किया है एंड लाइक उसमें देखते हुए लाइक गो टू मीटिंग की न्यू आ गई यूएसए बेस्ड कंपनी है एंड Uh, सबकी अपनी अपनी प्रोडक्ट पे चाह रहे हैं कि वो जूम की जो पावर अभी लाइक 2 मंथ पहले जो एक होप थी एक लाइक एवरीवेयर जूम बट वो हाइप कम करने के लिए सभी सभी अपनी लाइक अपनी अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं और सबकी अपनी प्रोडक्ट को इतने इंक्रीज कर रहे हैं जस्ट लाइक हम 1 आवर्स कर सकते हैं 100 पीपल के साथ जो right. शायद आई थिंक जूम में नहीं कर सकते 45 मिनट्स है तो Yeah, right. एवरीवन कंपेयर अपनी प्रोडक्ट को कर रहे हैं और उसको कैसे डेवलप करना है और कैसे पार्ट में सर इसको क्या बोलते हैं एज ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट लाइक इसमें क्या टर्म होंगे प्रोडक्ट Yeah, definitely. So इसको you can say comparator analysis, ठीक है? ओके And not only in COVID-19, ये भी एक प्रोडक्ट मैनेजर का रोल है, doing the ओके comparator analysis। तो you know अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, let's say कोई आपका एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी हैव जूम, ठीक है, एंड देन जी वी हैव गूगल मीट्स। तो या हमारे पास ये 2 चीजें हैं। तो लेट्स से गूगल मीट्स क्या सोच रहा है, जूम इज डूइंग दिस थिंग, उनके इतने यूजर हैं पर मंथ, उनके ये फीचर्स हैं, तो हम क्या फीचर्स डाल सकते हैं टू बी बेटर देन जूम, ओके राइट? तो उस पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं कि उन ओके लोगों के पास ये ऑफरिंग है, हमारे पास ये ऑफरिंग है, वो ये चीज ऑफर नहीं कर रहे, वी कैन ऑफर दिस, या right? So that's also the डेफिनेटली role of product manager.
I mean also user research team का user experience research वो लोग भी ये काम करते हैं. Okay. So it's all in all, as I said, कि product manager communicates with all the stakeholders, right? Okay. It's sort of a collective and collaborative thing. Okay. I guess we have some question. Yeah. Would like to have investment use of profit as a investment. Would like to have investment or use profit as investment. I didn't get the question. So do you mean कि investment ले लो या पहले profit कमाओ and उससे investment करो? Is that the question? Yeah, I think so. Tushar bro, please explain कर दे भाई क्या पूछ रहे हैं and then we'll dive into it. But अगर that is the question, then I can tell you it depends on your product, man. Like let's say you're building the next level thing. Like I invested in this company called what's it called, man? So it's basically the company is building these futuristic homes, domes, right? It's called, I think it's called some ship. I don't remember, man, what the heck's happened to my knowledge. But yes, the company is building, let's say, futuristic homes. तो उन्हें बहुत ज़्यादा investment चाहिए, right? So for that, obviously they're going to need investors. Investor नहीं होंगे तो बनाएंगे कैसे इतनी महंगी चीज? वहीं अगर आपका कोई छोटा मोटा ऐप है जिसके लिए ना ज़्यादा investment नहीं चाहिए, so obviously what you can do is खुद के basis पे बना लो उस ऐप को, लॉन्च कर दो, मार्केट से तुमने पैसा कमाया, उसको वापस से इन्वेस्ट कर दो. Like if you know my full story, then we got some investment offers at InterCon Dubai, where I won the top 50 tech leaders award. तो वहाँ पे हमें 3 investment offers मिले थे Verved को, but we didn't take them because हमें जरूरत नहीं थी उनकी. You know, but we got कि हाँ हमारी कंपनी की वैल्यूएशन जो है 1,50,00,000 है, but we didn't need the investment, so that's why we just dropped it. You know. So that's what it depends, man. If you need the investment, take it. Don't need it, leave it. I mean, you wouldn't want to give away your equity. Okay. You know? So I think हमने सही बोला था. Question हमने सही जज किया था. तुषार का question same था. But तुषार का question जो है, according to a small business, like a small app application बना रहे उसके लिए सही है. अगर if we'll see that like big budget like 300 crore या 200 crore, उसमें हमें investor पहले चाहिए. Then after we will go for further. Yeah, definitely. And actually like that is the way to go. आप किसी भी company को देख लो, Google, and then you have Facebook, इन सब के भी investors हैं, you know, हर company के investors हैं. Yeah. So totally, as you grow, you will need investment. अगर तुम कोई product बना रहे हो and तुम चाहते हो कि वो $1 billion company बने, obviously you will need investment. But then always it's hard to get investment जब आप just launch ही किया product. Because investors के पास कोई proof नहीं है ना आपका product कैसा perform करेगा. If the market is really, you know, if the market is enjoying your product. So that's what it depends on. Sir, अगर मैंने बिजनेस एनालिसिस किया था पेटीएम का, पेटीएम भी पहले ऐसे ही हुआ कि पहले उसने अपना लोकल मार्केट तैयार किया एंड लाइक लोकल मार्केट एंड सम आफ्टर लोकल मार्केट इंकरेजमेंट आने के बाद फर्दर लाइक फॉरेन कंपनीज उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी. उससे पहले उसमें लाइक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, बट आफ्टर ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल या ट्रस्ट ऑफ लोकल मार्केट, people's like outsider investor taking interest कि हाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, it will go now. तो इस ऐसे थिंग्स को कौन देखता है, ऐसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे प्रॉफिट लॉस जो होता है और एज ए लाइक हम पेटीएम जैसे केसेस बहुत सारे होंगे, उसको हम आप कैसे देखोगे? Yes, उसके लिए see, I think if we're talking about investment, then we can also talk about ROI, return on investment. Okay. So that is the job of product manager. ठीक है, कंपनी ने इतना पैसा लगाया और इतना पैसा कंपनी ने कमाया, तो कितना पैसा लगाने पे कितना पैसा कमा रहे हैं, that is called return on investment, right? Investment पे return कितना आ रहा है. And then another thing is payback period. Payback period ये होता है कि आपने let's say 1 करोड़ रुपए लगा दिए एंड आपको 2 साल लगे 1,10,00,000 कमाने में. ठीक है, तो जो आपके वो 1 करोड़ रुपए थे वो आपको वापस कब मिले? 2 साल में. सो 2 साल इज द पेबैक पीरियड. तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट मैनेजर देखता है. बट देन इफ यू टॉक अबाउट की इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं लोगों से एंड देन वी लुक फॉर इन्वेस्टर्स, VCs एंड एंजल इन्वेस्टर्स.
तो ये सारा काम तो this particular teams at different companies. Okay. Again, I Okay. said it depends I on got the it. role of the product manager. Okay, Yeah. I got it. I got it. I got it. Yeah, and investment में again there are different rounds. Seed round होता है, Okay. first round भी, तो हर एक round में investment मिलती है. There's a lot to it. Okay. Okay. You can start your topic. Yeah. So I have actually covered all the things that I want to talk about, but let me see if something is left. We've talked about comparator analysis, and I think that's all that you guys should know right now. Otherwise, Okay. it'll get too complicated. But हम थोड़ी basic बात कर लेते हैं communication skills की. ठीक है? Okay. Communication skills for a product manager, it's really important. Yeah. Because let me tell you, product manager हो गया, project manager हो गया, इनकी दिन में 10 से ज़्यादा meetings होती हैं. On an average. हर घंटे में एक meeting, हर दूसरे घंटे में meeting. तो उसके लिए they have to be really good at communicating. ठीक है? Okay. अब communication skills में क्या क्या जाता है? एक तो हो गया active listening. ठीक है? If you're good at communication, you have to be a good listener. है ना? Right? Yeah. And then we can talk about storytelling. Storytelling is also one thing. And then we can talk about presentation skills, right? Okay. And then we can talk about negotiation. So इन्हीं basic चीजों की हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत. Okay. So as I said, man, communication में listening, speaking, ये दो skills आती हैं. Speaking में आप अच्छे हो, but आप दूसरों की सुन नहीं रहे हो. Then you're a really bad listener, man. You're a really bad listener. You're a really bad speaker as well. Yeah. And दूसरे की नहीं सुन रहे हो, खुद बोल रहे हो. So you're really bad speaker, right? Okay. So that's why यहाँ पे आ जाता है हमारे पास listening is important and speaking is also important. And then to be active listener, ठीक है? Active listening कैसे करनी है? इसके लिए I can give you some tips. Okay, definitely. First, realize कि active listening is more than listening. तुम सिर्फ सुन नहीं रहे हो, तुम दूसरे बंदे की बात को सिर्फ सुन नहीं रहे हो. तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है कि you are not imposing your own ideas while the other person is speaking. Yeah, definitely. Like होता है, I mean काफी बार होता है जैसे एक बंदा बोल रहा है and हम उसे बीच में interrupt कर रहे हैं without listening to the full thing. So that's not active listening, right? Yeah. So and also you have to fully understand the person's point of view. Yeah, उसकी definitely. बात पूरी सुन ली and then अपना perspective रखा. It's good, sir. It is good, sir. क्योंकि आप किसी की बात सुन रहे हो then आप reply कर. I think one question. Can you give some step to improve it? I mean steps to improve it. I mean man, just take care कि पहले तो आप दूसरे बंदे को interrupt नहीं कर रहे हो जब वो बोल रहा है. ठीक है? That is one of the things that I can tell you. And then next is obviously the basic personality things like making eye contact. That is important. Smiling is important. Okay? It's very important when you have to persuade somebody. And then we have just ask questions to clarify if you have any doubts. Like दूसरे बंदे को interrupt मत करो. Wait, let them speak. उस बंदे ने बोल लिया, उसके बाद तुम अपना perspective रखो, अपने question पूछो. To fully understand किसने क्या बोला है, instead of interrupting बीच में. है ना? Yeah, definitely, sir. Teachers कहते हैं स्कूल के टाइम पे एक बार पढ़ा ले, एंड में क्वेश्चन पूछते हैं. लाइक मैं अपने वेबिनार्स में कहता हूँ यार लास्ट में Q&A होगा तब क्वेश्चन पूछ लेना, बीच में मत पूछो. है ना? So I feel like these are some of the tips, and then we can talk a bit about storytelling. Product managers are storytellers. That's another definition that I can give you. Because the stories क्या करती हैं, it allows to not only put out the sort of view that you have, but also to share, to express your vision, right? अपना vision express करना, and also अपनी narration के through अपने vision को compelling बनाना. These are some of the things. So a good product manager is also a good storyteller. Okay. That's also something that I needed to keep in mind. And I noted it because as a product manager, it's a good कि आप जो बोलना चाहते हो आप उसको स्टोरी की तरह कैसे देख रहे हो, या something एक illusion तैयार करना as like सामने अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट कोई भी देख रहा है तो उसको उसके सामने कैसे इंटरप्ट कर रहे हो और कैसे अपनी बात को कह भी रहे हो और उनसे मनवा भी रहे हो, like बिल्कुल. तो अगेन स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं तो स्टोरी में क्या क्या होता है
एक हीरो होता है, Yes, sir. एक कोई sort of गोल होता है स्टोरी का, Yeah. एक विलेन भी होता है ना, Definitely. और एक Yeah. हीरो का साइड किक होता है, एंड स्टोरी का एक प्लॉट होता है. तो दिस इज sort of, you can, if you can relate that to product management, तो इस चीज में हीरो कौन हुआ? द यूजर इज द हीरो. ठीक है, हाँ, यूजर हीरो है. विलेन कौन हुआ? विलेन इज द प्रॉब्लम. जो मैंने Yeah. सबसे पहले बोला था कि प्रोडक्ट मैनेजर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. तो Yes, sir. विलेन हो गया प्रॉब्लम, जो कि प्रिवेंट कर रही है हीरो को उसके गोल अचीव करने में. यूजर हीरो है, यूजर का जो गोल है, जो उसकी जरूरत है, उसको अचीव नहीं कर पा रहा. वो क्यों? क्योंकि बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है, बीच में एक विलेन है. ठीक Yeah. है, Definitely, sir. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? We as a product manager, we as a company, as problem solvers, we have to help our hero to achieve their goals. Cool. Okay. Okay. That is product management. And now let me give you some tips on how to build good stories. ठीक है, Yeah. तो उसके लिए Definitely, पहला sir. tip that I can, उसके लिए पहला tip that I can give you is think about the problem from user's perspective. Okay. Okay. And this is why a user research is so important. Like अभी से तुम 5 साल पहले देख लो, लोग इतना फोकस नहीं करते थे यूजर रिसर्च पे, बट इन टुडेज, आज के वर्ल्ड में बहुत फोकस है. Okay. Because अगर आप अपने यूजर की नीड्स को नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई भी प्रोडक्ट बना लो, सक्सेसफुल नहीं होगा. You know, Of course, sir. Definitely, sir. yeah, for any product to be successful, there has to be someone that wants it or needs it. अब again I'll take shots at TikTok. TikTok की जरूरत नहीं थी लोगों को, but लोगों ने वो enjoy किया, you know, for entertainment. Okay. ठीक है. Now we can talk about Lyft and Uber. Now USA में ये दो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे अपने इंडिया में Ola and Uber है. तो लिफ्ट की जरूरत थोड़ी ना थी, Uber ऑलरेडी था, but Lyft thought कि हम Uber से बेटर कुछ करेंगे, you know. Okay. Then Lyft was born, and अभी Lyft बहुत सही कर रहा है. These two are competitors, तो दोनों एक दूसरे का कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे. ठीक है, सो आई होप इसी की सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं इस चीज में, in product management. And then I said कि persuasion की बात कर लेते हैं. तो persuasion is also very important, a really important quality to have as a product manager, because you have to be persuasive enough to, you know, convince the team कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए ये सॉल्यूशन पे वर्क करना है. Okay. राइट. आई मीन तुम अपनी अथॉरिटी नहीं जमा सकते कि मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, तुम ये चीज करो. यू कैन नॉट डू दैट. What you have to do is you have to align all the team members, all the stakeholders, and make them see the vision that you have. Okay. Right? Yeah, so I hope that makes sense. And how you can sort of build persuasive, you know, messages or persuasive statements, वो कैसे करना है? तो इसके लिए I can tell you, पहला आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है. Okay. ठीक है. देन आपको पता होना चाहिए आपका व्यू क्या है. लाइक आपको अपना खुद का व्यू तो क्लियर हो पहले, तभी तो दूसरे को समझा पाओगे. राइट. ये दो चीजें पता है. देन आपको पता होना चाहिए बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव. Okay. एंड देन यू हैव टू बी डेटा ड्रिवन. ठीक है, आपको डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू डिस्कस द ऑब्जेक्शंस. लाइक अगर आप एक मीटिंग में हो प्रोडक्ट मैनेजर, एंड यू आर द प्रोडक्ट मैनेजर इन अ मीटिंग, एंड अगर किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस ऑब्जेक्शन को भी आप इनटू कंसिडरेशन लो एंड सॉर्ट ऑफ डिस्कस इट. राइट, उसको वहीं पे डिस्कस कर लो. एंड देन एट द एंड ऑफ द मीटिंग देयर हैज टू बी अ कॉल टू एक्शन. कीप दिस इन माइंड. लाइक जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हर एक मार्केटिंग कैंपेन में कुछ कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जैसे कि गो चेक आउट आवर वेबसाइट, रजिस्टर फॉर द वेबिनार, बाय दिस प्रोडक्ट. तो यूजर तुम्हारी चीज देखने के बाद कोई एक्शन तो ले उससे. राइट. जैसे इंस्टाग्राम पे बात करें, कॉल टू एक्शन क्या हुआ? 10 के फॉलोअर्स के बाद यू गेट द स्वाइप अप फीचर. राइट. स्वाइप अप फीचर जो मिलता है, दैट इज कॉल टू एक्शन. तुम लोगों को कह रहे हो कि तुम स्वाइप अप करो to you know, go and check out the article or the video. So that's a call to action, right? And I guess that's pretty much it, man. That's pretty much it. Then presentation skills आते हैं, because as I said, product managers की बहुत meetings वगैरह होती हैं. Different teams, technical team, marketing team, user research team, designing team, सबके साथ meetings होती है, and so you have to be good at presentations as well. Yeah. So, last question, energy, like starting to ending, energy should be like constant, and energy कम नहीं होना चाहिए.
It's like power आपके बोलने का, आपके सोचने का, एक्टिव लिसनर हो, बिकॉज आपने मॉर्निंग में डेवलपिंग टीम के साथ मैंने मीटिंग लिया, देन लास्ट में आपने डिजाइन के साथ लिया. अगर हम किसी में भी अपनी एक्टिव लिसनिंग कम किए, देन इट विल अफेक्ट, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमने उसका बात नहीं सुना. या लाइक तो एक्टिव लिसनिंग और हमारी स्टोरी टेलिंग, हमारी एटीट्यूड, एंड हम कैसे दूसरे का बात सुनते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू. And sir, I will ask question as a personal interest there. So what is a career in of product management in India, sir? So what is the what? Career in product. I mean, look, India में there is a huge scope. Let me tell you that. क्यों? Because product management इतने लोग नहीं कर रहे, right? Okay. Product management में I have literally seen nobody from my college. Because ज़्यादातर लोग यार इस फील्ड में जाते हैं, वो जो लेट्स से MBA कर रहे हैं, MBA वाले लोग चले जाते हैं. Because ये एक management role हुआ, it's not development role, right? Okay. So this is like what I can tell you कि scope है, कंपनीज हायर कर रही हैं. पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, अब अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? सो इफ यू आर द टाइप ऑफ पर्सन लाइक व्हाई आई ट्रांजिशन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम iOS डेवलपमेंट, बिकॉज मैंने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, एंड यू नो लाइक आई मेट लाइक thousands of people अभी तक पिछले 2-3 साल में, and so I have seen कि I am good at coding, but I am better at talking to other people, you know, understanding their problems, building products, business plan, marketing. You know, in some way I am much better. Communication. So that is why I decided कि maybe product management is something that will interest me. So then I went on about researching कि क्या होता है क्या नहीं, and so I thought this is the perfect match for me. So Sir, that's why I switched into it. it is bitter and like कड़वा है, but मैंने कल ही पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन चाइना या अनदर कंट्रीज के होते हैं, वो इंडियन से ज्यादा लाइक रिसर्च करते हैं या इंडियंस, बिकॉज अगर हम देखें तो stuck, I cannot hear you. Okay. Am I audible now? Yeah, go ahead. Okay, I'm saying that product management of India and like you can see that Israel या another country, तो जो हमारी उनकी प्रोडक्ट आती है, इंडियन प्रोडक्ट उतनी बिकती नहीं है, बट कंपैरेटिवली आउटसाइडर की प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है. तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद इन इंडिया है, वो लाइक वो कैसे सोचते हैं और आउटसाइडर कैसे सोचते हैं? बिकॉज सर आप मानते हैं कि नहीं कि जो आउटसाइडर कंपनीज की प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकती है, लाइक एज ए मोबाइल फोन्स ले लीजिए या एवरी प्रोडक्ट. हाँ, सो आई थिंक इसके लिए आई कैन आंसर यू वन. अगर चाइना से कंपैरिजन करें, चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो ज्यादा बिकते हैं, सिंपल एज दैट. ठीक है, बट आई गॉट द पॉइंट कि हम एज इंडियंस वी लाइक जो कि दूसरी कंट्री से इंस्टेड ऑफ बीइंग आत्मनिर्भर, ओके राइट? सो आई थिंक अब उसमें कंपनी की गलती थोड़ी ना, वो तो लोगों के ऊपर है यार, उनके प्रेफरेंस के ऊपर, उनकी चॉइस के ऊपर है, उन्हें क्या करना है. But then again, obviously there are so many good Indian products. You know, if the product is good, if the audience needs it or likes it, तो वो उस चीज को खरीदेंगे definitely. So what I think is ये लोगों का mindset होता है like अपने इंडिया में कि जो दूसरी कंट्रीज की चीजें वो ज्यादा अच्छी हैं. But you know, I think आजकल मोदी जो कर रहा है आत्मनिर्भर वाली चीज, उससे थोड़ा बदलाव आएगा. नहीं, I think so. I think people को like एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट्स है विद इन इंडिया, वो वेल डिफाइंड रहते हैं, उनकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है. Definitely, yeah. I mean there are many good products, definitely. Yeah. Hope Atmanirbhar will be work for us, and definitely India will be Atmanirbhar. And let's see. We can take question from audience. Yeah, sure. You can ask any question regarding career. Yeah, anything. If you want, ask like career of product management. It's been almost 1 hour. Yeah. अच्छा सही है, चलो.
Guys, if you have any questions, then we push to. But now let's end this, I guess. Yeah, because it, I think sir, I enjoyed totally session. इस session को मैंने बहुत enjoy किया. I learned lot of things because हम लोग एक developer team के आते हैं तो हम लोग maximum things like developing phase देखते हैं and हम इसमें product management या something else नहीं देखते. But ये हमारा topic था तो but I read daily newspaper like anything. So मुझे इतना पता है कि कैसे एनालिसिस करते हैं बट आई डोंट नो एवरीथिंग बट आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस सेशन Yeah, that's what you need, man. Like if you have an idea, product management थोड़ा बहुत भी क्या है, then that is good. I mean, you're one step above than the other developers. So अच्छा है. Yeah. I'm very thankful to you, sir. Yeah. Thank you, man. Thank you for having me. Yeah, thank you very much, sir. I think